Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We have successfully completed our first chapter, and now it's time for chapter number 2, that is force, right? I hope आप सभी लोगों ने homework कर लिया है and you have submitted your homework. I will be seeing it. All right, and these things like doing homework and doing study, doing questions again and again, watching videos, all such things will be taking you towards your target, right? And what we target 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCJS, PRM, and obviously your school examination. That is so important, right? So this team will be helping you in all achieving all such goals of yours. Okay, if you want any DPP study material, sample study material DPP, if you want that, you can access it on the Telegram channel provided by us according to the different classes. So all you have to do is you have to go on Telegram app. All right, you have to write the code TTB08 for class 8 if you want to join class 8, obviously. Then you have to write that code in the search box, this code TTB08, and then that's it. You can join, you can access. All right, and important thing I will tell you, I have already told you, but for the new viewers, I have to say it again. Look, what you have to do is you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. all right, you have to go on this website, and then what you will be doing, you will see such type of packages of different classes on that page. All right, and all you will get, you can analyze all the packages, you can compare the packages, and then you can choose anyone what you want, right? This is the example of one of the packages that will be present there. So this is the cost of this package is 9,000, and in this 9,000 what you will be getting, or what your beneficial things will be: comprehensive study material. Number one step, comprehensive study material is a must, because if you don't have your resources, proper resources, then how are you able to even compete in the competitive examinations? Recorded in live classes by TTP experts. This is important. Why so? Because if you have any query about the previous topic, or the topic which was told many many gap, then what you will be doing, you can go back and see the recorded lectures. All right, and you can obviously strong your concept from there. Homework submission is important, because many students do not even look at their homework, right? So what you have to do is to watch these lectures. I will be giving you homework, and what you will be doing, you will be submitting that homework through the Google Classroom. Will be taught to you. The next one is bi-weekly quizzes. What bi-weekly quizzes? Because bi-weekly quizzes will tell you that how much you understand from a given chapter, after a given lecture. All right, so this will be the quizzes after the lecture. Periodic test papers of the same pattern is important. Why so? Because periodic test papers will give you a taste of the competitive exam, how it will be coming, how much questions it will be covering, how to manage your time, how to manage your stress, and all such things will be cleared or will be taught to you through these periodic test papers of the same pattern, right? All you have to do is to buy now. Click on the buy now. You will be directed on this page. Now this page is important. Why so important? Because this is showing the price of the package is 9,000, right? All you have to do is you have to write a code, that is CYLIVE. This code, if you write this code, you will be getting 30% discount. That is 2,700 amount will be deducted from your total amount, that is from 9,000, right? And you will be getting the package in just 6,300. So you will be getting these such things in just 6,300. That means you will be achieving your target in just 6,300. All right, all you have to do is to buy package, and then you will be having such options through which you can pay. Any option you can choose. All right, if you have any query regarding the things which are literally confusing you, or you may be misunderstood, then what you have to do is to call us on this number. This number will be very much helping you in your queries. All right, so this is the thing I wanted to tell you. If you have any single desire to crack your examination, then you must go for this. I will recommend it. Now let's start the topic. What the topic is saying is
force. All right, we will be discussing today force. We will be seeing all the effects of force, right? We will be seeing all such things which are very beneficial to understand the first concept that is in the physics, right? This is force, all right, and a little bit of its effects. Now, take out your copies and books, obviously, and then you have to promise yourself you will be watching the whole lecture. All right, you will be taking proper notes and then you will be revising it on the daily basis. If you do it, you obviously will become a smart student. Right? Now see, this is our learning outcomes today. What we are going to learn is force and effects of force. ठीक है? ये है keywords जो कि force, push, pull, balance forces, unbalance forces, resultant forces. These are the keywords which will lead you to this chapter. Alright, now let's start. कि भाई force क्या होता है? What is force? So this is the introduction. ठीक है? Through this introduction, I am going to show you some actions. All right, such actions you will definitely see them around yourself, everyday actions which are you doing every single time. All right, and those such actions will lead you towards the force, the concept of force, right? Now see, observe it very carefully. Number one, what are you seeing here? This is an action called kicking, right? We do kick with our legs. And this minion has just kicked his friend, which should be like avoided. We should not kick our friends, obviously. Yeah. We should not even kick our friends. You have to kick on the ball. Like this is the thing that what you are seeing here as the action which is showing is kicking, right? This kicking is an everyday action. We use them every single time, right? Now the next one is hitting. Look how this lady is hitting the ball. This is an action which shows you that hitting is an everyday action. We do it every single time. All right. Now let's move on to the third one. See, this is the thing called lifting up, and we do lift everything. Like we do lift our books, we do lift our pen, we do lift our bottle, all right, and all such things. We do lift many things in our day. So this is the thing, this is lifting up and this is an action too, right? Now let's see, pushing. How this man is pushing, or a cartoon I say. This cartoon is pushing his friends, which is not good for health because that friend will beat you up after that. So pushing is also an action and a very dangerous action, right? Now see, pulling. How this cartoon again is pulling a rope, right? It's pulling a rope. That means it is an action. Obviously, we do pull some things in our day-to-day life, right? Again, the last one. Opening a door. This is so common. Opening a door is too an action, and this is so common because we do it every single time, right? When we go from one room to another, we do open the door, right? Now see, all the such things, all such actions will be leading you towards the force. How? Whenever you do such actions, even every single action you do requires force, right? Either you are applying force or either you are experiencing force, there is some application of force, right? Now see, in kicking, when this minion kicked his friend, the other minion, not I think his friend. So the thing is that when he kicked it, he applied the force so that the minion goes away, right? Now see, ball is kept right on the stick, I would say, then what it is happening, whenever that ball is kept and the lady hit the ball, it goes away, right? It moves, it start moving. That means some force is to applied on that ball, right? In lifting up, his muscular force is applicable here. His muscles are doing the working of lifting those bunnies up, right? Now see his friend, how is he pushing his friend, which is too an application of force. How? When we push someone, there is an application of force, right? When we pull something, there is an application of force. We are forcing someone to
forcing something or someone to come with our pulling, right? And opening a door is too, because what you do, you just pull it, right? You pull the door, you hold the door knob and just pull it, right? So that is the thing. All such actions will require application of force. This is the thing, that these applications, or we could say these actions will force these actions are just something pulling or pushing, right? We can say that this minion is pushing his friend, obviously kicking, like you are pushing someone, right? Obviously through a leg, not through our hands, but it's still a pushing. That hitting, when it is doing pushing with the help of a bat, pushing the ball with the help of a bat, that is applying force. This can be taken as you can say pushing in the upward direction and pulling in the downward direction. So this can be considered as pushing and pulling, right? Pushing, it's still pushing, pulling is still pulling, and this can be also considered as a pulling. That means कि जितने भी actions हैं, जितने भी एक्शंस आप अपनी रियल लाइफ में करते हैं, वो सभी के सभी एक्शंस या तो पुलिंग के होते हैं या पुशिंग के होते हैं. दैट मीन्स ऑल सच एक्शंस आर either पुशिंग और पुलिंग. दैट मीन्स यू आर ऑलवेज अप्लाइंग अ फोर्स और यू आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स. So what is the force? To understand what is the force, we have seen some actions, all right, everyday life actions, all right, and now we are seeing some effects. What are the effects after this type of application of force? All right, now let's see. These are the effects of force. Let's see one by one. Number one, force can change the shape of objects. How? Force कैसे change कर सकता है shape को? What it can do, I'm showing you by this. You are just applying force to this sponge ball, right? Not you, the hand. All right, so this is the thing, that the shape of the sponge ball is changing, right? That means, what it means, that force is applying, and as a result of that force, the shape of the ball is changing. That means force can change the shape of the objects, right? Let's see. Force can change the direction of moving objects. क्रिकेट तो सभी ने देखा होगा, डेफिनेट सी बात है, राइट? तो क्रिकेट में क्या होता है, जब कभी भी बॉल फेंकी जाती है, बैट्समैन उसको हिट करता है बॉल को, तो बॉल जिस डायरेक्शन से आ रही होती है, इट गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग थ्रू द बैट, राइट? तो यहाँ पर यही चीज है, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर. यहाँ से बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, this man is hitting the ball with this bat and it goes in the opposite direction. That means a force can change the direction of the moving object, all right? This is the very good example, or in cricket too. Now see the next one. Force can stop the moving objects or slow them down. Whenever you stop the ball, you stop a moving ball, or you stop something that is moving, you are applying force and forcing that body to be stopped, right? यहाँ पर भी सेम यही काम हो रहा है. This player is actually stopping the ball through his hands by applying some force against the motion of the ball, right? So the thing is कि force can stop the moving objects. Now force can set stationary object in motion. Now see, this ball is kept, it was stationary, it was at rest, right? When the lady hit the ball, now it is moving. Now it start moving and it goes away, right? So that means a force can stop a moving object and force can move a stopped object, right? Force can change the shape of the motion, shape of the object, and force can change the direction of the motion, right? So these four things, we can say the four effects of force that are very much crucial to know, because these are happening in our everyday life. All right, so now that is the time to define the force. Now let's define it. How? Force is a pull or push which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body or changes its direction or shape. That means हमने जितने भी effects देखे हैं, उन सभी effects को हमने definition में convert करके लिख दिया है. That's how we write the definition of force, right? Now see, अगर तुम 8th में आकर भी force is a pull or push ही लिखते रहोगे, that means you are not even improving. So what we need to do, we need to give an more elaborative definition of force, right? So that is the elaborative one, we can say. So what we have written is,
force is a pull or push. That means yes, in every single action there is some pushing or pulling, right? So force is a pull or push which changes or tends to change the state of rest. That means it is changing the state of rest. That means it is moving a stopped object, right? Or of uniform motion of a body. That means it is changing the uniform motion of a body. That means if a body is moving, now force can stop that object, right? It can change that speed, or changing its direction or shape. Either it changes its direction of motion, we have seen in the case of cricket, or the man was hitting the ball, right? And it can change the shape. We have seen the sponge ball, how it is changing shape, right? ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बहुत ही तेज स्पीड में कोई गाड़ी आ रही होती है ना, और बाय मिस्टेक इट गॉट इनटू एन एक्सीडेंट और समथिंग, उसका शेप कितना क्रम्बल हो जाता है, राइट? वो उसका शेप कैसे बदला? वो इसी वजह से बदला बिकॉज देयर वाज सो मच लार्ज फोर्स इन सो मच लेस टाइम, दैट्स वाई उसका शेप पूरा बिगड़ जाता है। उस कार का जो पूरा शेप होता है वो बिगड़ जाता है। और ऑब्वियसली बात है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप देख सकते हैं कि, और एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ, रबर बॉल जो होती है, इट कैन इट कैन चेंज शेप इफ वी अप्लाई द फोर्स, इफ वी होल्ड इट एंड we crush it in our hand, right? So it will change the shape. So these are the examples, real life examples where you experience force or you apply some force, right? Now the thing is ki how we denote the force. See, force is denoted by capital F or small f, choice is yours. Okay, now see, all the actions we have seen has taken place only by applying force. Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself, right? Now see, what is the meaning of this sentence is, if a body is at rest, ठीक है, आपने क्या किया, अपने घर में कहीं पर बैड है, आपका बैड रखा हुआ है, राइट? वो बैड अपने आप मूव नहीं करेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट द थिंग्स विच आर एट रेस्ट विल नॉट मूव एट ऑल बाय देमसेल्व्स। खुद से नहीं जाएंगे, खुद से मूव नहीं करेंगे, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेंगे अनलेस कोई फोर्स उन पे एक्ट ना हो, राइट? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सन के चारों तरफ रोटेशन कर रही है, it is moving, right? So the thing is, it is in uniform motion too. So the thing is, अगर अर्थ को रोकना होगा तो it would be requiring too much force. That is the thing. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, राइट? अगर आप उसको रोकना चाहते हो, एक चलती हुई बाइसाइकिल, यू स्टार्टेड द बाइसाइकिल, यू स्टार्ट राइडिंग इट, अगर आपको उसको स्टॉप करना होगा, यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक. दैट ब्रेक वर्क्स एज अप्लाइंग फोर्स, राइट? दैट्स व्हाई इट स्टॉप द बाइसिकल. जब कभी भी कोई भी चीज मूव करती है, देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज यूज टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट? एंड वी कैन से द चेंज इन शेप. शेप कभी भी अपने आप चेंज नहीं होती है, राइट? अनलेस द नेचर में नहीं हो, उसका मटेरियल का नेचर डिफरेंट हो. लाइक अगर तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, लाइक योर स्केल, यू कैन से, आपके बॉक्स में आपका स्केल रखा है, वो अपने आप शेप चेंज नहीं करने वाला है. अगर आप उसको जानबूझकर तोड़कर, फोर्स लगाकर तोड़ देंगे, उसको किसी तरह खराब कर देंगे, तो इट वुड बी द फोर्स अप्लाइड बाय यू, नॉट द कि भाई उसका खुद का कुछ सेंस आ गया है कि मुझे अब अपना शेप चेंज कर लेना चाहिए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. दैट मीन्स कोई भी बॉडी कभी भी खुद से ना तो मूव कर सकती है, ना ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ना ही वो अपना शेप चेंज कर सकती है, और ना ही घूमते घूमते वो खुद को रोक सकती है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक थिंग, हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट और हर एक चीज रोकने का, चलने का, कुछ भी रिक्वायर्स फोर्स, ठीक है? आइदर वो तुम पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फिर तुम उन पर कर रहे हो, द थिंग इज देयर इज सम फोर्स इंक्लूड्स, राइट? तो आपको ये चीज पता होगी. दिस इज, यू नो व्हाट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, वी कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? सो वी कैन से द लॉज ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज सेज कि कोई भी बॉडी खुद से नहीं मूव कर सकती, ठीक है? देयर वुड बी सम, यू नो, सम फोर्स और समथिंग शुड बी देयर टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ
let's move on to the mathematical form of force, right? Now we have seen कि भाई real life में force क्या होता है. We have obviously described it through the actions, through the effects. Real life force इज वेरी इजी. आपने इसको धक्का मार दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है. किसी ने आपको धक्का मार दिया, फोर्स अप्लाई हो गया है. तुमने दरवाजा खोला, फोर्स अप्लाई हो गया है. तो ये तो थिंग थी जो कि रियलिटी में हम लोग अपनी रियल लाइफ में फोर्स अप्लाई करते हैं. बट हम इसको मैथमेटिकली कॉपी में कैसे लिखेंगे? दिस इज द थिंग. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला F equals to ma, बिकॉज यू नो कि भाई जो भी बॉडी है जिस पे भी आप फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी का डेफिनेटली कोई ना कोई मास होगा, बिकॉज मासलेस ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, राइट. तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई मास तो उस ऑब्जेक्ट का होगा ही होगा, राइट. अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर इधर मूविंग इट. स्टेशनरी है तो आप उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. इसका मतलब आप उसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन दे रहे हैं. यू आर मेकिंग इट मूविंग, राइट. So you are giving an acceleration. This is why we write F equals to ma. All right. Now see, mathematically force F is equal to the product of mass m of a body and acceleration a produced in the body due to that force. उस force की वजह से जो acceleration produce हुआ है उस body में, right? If you like applied a force on an ball, तो बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा जो कि इस फोर्स की वजह से आया है उस बॉल पर, दैट इज नोन एज द फोर्स. और उसको हम लिखेंगे मास ऑफ द बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल गिव यू द फोर्स अप्लाइड बाय यू, राइट. नाउ सी, आप इसको रिमेंबर करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं. वी कैन से लाइक वी ऑल नो दैट मॉम इज लाइक अ फेरी टू अस, राइट. So we can obviously write the trick when we write fairy equals to ma. Alright, so you can say F for fairy and M is ma. So you can write fairy equals to ma. Your mom is like your fairy. Now see, the thing is, this is just the trick to remember and that's it, because some formulas are very difficult to remember. Now, how are we writing this? Anyone has any idea? If you have studied acceleration in the previous classes, you will be able to deriving this. Now, see, let's derive it. See, we know that the acceleration. अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? What we are doing is we are deriving this formula from this, right? So we are going like this. Now see, what I know is the formula for acceleration is what? Change in velocity. Change in velocity divided by the time taken. Alright, change in velocity divided by the time taken. Now see, ये जो change in velocity है, how we can write it in mathematical form? How we are going to write it? Change in का मतलब क्या होता है? That means पहले कोई value होगी, right? थोड़े टाइम बाद वो वैल्यू चेंज हो गई होगी. लाइक एक कोई बॉडी है वो 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रही है. आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम 6 मीटर पर सेकेंड. So the change in between the initial and the final value will be the change in velocity, right? तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे final value. ठीक है, हम इसमें क्या लिखेंगे? Final value, final velocity actually. Final value of velocity minus initial value. Divided by the time taken. Now see, final velocity को हम किस तरीके से लिखते हैं? We always use a symbol to denote this, because हम हर टाइम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाहेंगे. So we use some symbols so that we can write it in a shorter mathematical form. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी v, स्मॉल v से करेंगे. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को आई विल लाइक रिप्रेजेंट u. ठीक है, स्मॉल u. एंड टाइम टेकन विल बी
t, राइट। और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते ही हैं, तो स्मॉल a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, एंड ऑल आई हैव डन इज इस a की जगह पर आई डायरेक्टली पुट v माइनस यू बाई टी, दैट्स इट, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज बोथ वंस आर इंपॉर्टेंट। Alright, so this is how you will get the formula from f equals to ma to the f equals to m v minus u by t. How this formula is used in the numericals, I'll tell you. We will do some numericals today too. Alright, now see, units of force is very important because किसी भी quantity, obviously force is a quantity, right? तो किसी भी quantity को express करने के लिए definitely हमें जो unit है उसका unit बिल्कुल जानना चाहिए और important भी है जानना, राइट। तो एसआई सिस्टम में, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, दैट इज एमकेएस सिस्टम, राइट। एसआई सिस्टम में हम लोग फोर्स को किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन, राइट, दिस इज न्यूटन। ठीक है, दिस न्यूटन, वी रिप्रेजेंट फोर्स बाय दिस न्यूटन, राइट। नाउ सी, किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एफ इक्वल्स टू एम ए, ये हमारा फॉर्मूला था फोर्स का, राइट, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड। नाउ सी, अगर मैं इस मास का यूनिट रख दूं और मास का यूनिट एसआई में क्या होता है, केजी, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ये जो मास है इसका मैंने फटाफट से केजी लिख दिया, इसका एसआई यूनिट लिख दिया, राइट। दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो हमने क्या किया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, राइट। सो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूटन। ठीक है, अब देखेंगे क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मास का वैल्यू 1 kg हो जाए, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन, राइट। सो सी, यहाँ पर जो m का वैल्यू है, दिस मास, अगर हम इसको 1 kg रख दें, वी स्पेसिफिकली डिसाइडेड कि भाई मास हम 1 kg फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन से एंड आइदर 1 kg ऑफ बॉल। ठीक है, अब देखेंगे और हम उसमें क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, हमने इतना फोर्स लगाया कि भाई उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 kg की बॉल थी, राइट, और उसके ऊपर हमने इतना फोर्स लगाया कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने लगी। अब देखो, जब हमने m का वैल्यू 1 रखा, a का वैल्यू 1 रखा, व्हाट वी विल बी गेटिंग, 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स हम लगा रहे थे उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाने के लिए उसका वैल्यू एक्सेलरेशन का, तो जो फोर्स हम लगा रहे थे दैट वुड बी इक्वल टू 1 न्यूटन। देखेंगे यहाँ पर, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो इसका मतलब हमने बॉडी का मास फिक्स कर दिया है 1 kg, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the force acting on the body will be 1 Newton. That means this is a body. Okay, let's assume this is a body, and this body has mass how much, 1 kg we have decided. All right. Now अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पे कोई फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, ये फोर्स हमने क्या किया, इस पे अप्लाई किया, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। After application of force, body starts moving at acceleration 1 meter per second square. अब बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द थिंग, इफ द मास इज 1 kg, इफ द एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स विल बी 1 न्यूटन, राइट, ऑल द वैल्यूज आर 1 1 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका CGS यूनिट विच इज टोटली सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखेंगे, C इज फॉर सेंटीमीटर,
G is for gram and S is for second. ठीक है, तो इसका मतलब हम CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखेंगे यहां पर हम फिर से वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, F इक्वल्स टू MA, राइट। M हमने M जो मास है इस बार हमने, क्योंकि हम CGS की बात कर रहे थे और CGS के अंदर जो मास का यूनिट है वो क्या आता है, ग्राम। सो वी आर राइटिंग मास के लिए हम ग्राम यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एसेलरेशन। जब हम SI की बात कर रहे थे, SI सिस्टम की बात कर रहे थे, तब जो एसेलरेशन का वैल्यू था वो था कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी system, right, CGS system, that is centimeter. Now see, centimeter per second, so this will be like gram centimeter per second square will be what, dyne. That's not dyne, all right, this is dyne, ठीक है। तो ये जो dyne बनेगा यहाँ पर, this is called gram centimeter per second square is called 1 dyne, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम क्या करें, जो एक बॉल है वो 1 ग्राम की बॉल ले ले इस बार, ठीक है। इस बार हम क्या करें, जो मास है वो 1 ग्राम ले लें, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करें। अब हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉल पर, इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाए, ठीक है। मतलब हमने इस 1 ग्राम की बॉल पे इतना फोर्स लगाया कि ये जो एक्सेलरेशन है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाए बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितना बन जाएगा, वो फोर्स बन जाएगा हाउ मच, 1 डाइन, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम की बॉल होगी और उसके ऊपर हमने उसको किसी तरह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, तो इसका मतलब जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा था दैट वुड बी 1 डाइन, ठीक है। सी, when a force is applied on a body of mass 1 gram and the acceleration produced in the body is 1 centimeter per square, then the force acting on the body will be 1 dyne, ठीक है। write it down very fast, very quick. Alright, now let's move on to the next things, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड द डाइन। अब हमको ये बात पता है कि जो SI सिस्टम है डेफिनेट सी बात है वो CGS में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम 1 न्यूटन को भी 1 डाइन में थोड़ा बहुत जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों की जो यूनिट्स हैं उन दोनों को लिखने की कोशिश की। कैसे किए, 1 न्यूटन है, देखेंगे यहाँ पर जो 1 न्यूटन है, इस 1 न्यूटन को हमने क्या लिखा है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने पहले ही देखा था SI सिस्टम में, है ना। अब देखेंगे, मुझको ये बात पता है कि जो 1 kg होता है उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं पहले से। कुछ चीजें पहले से जानना जरूरी होना भी चाहिए, है ना। 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, और यही हमने यहाँ किया है। देखो 1 kg इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है 1000 ग्राम्स, ट्रू, हम लिख सकते हैं। नाउ अब मुझे एक और भी बात पता होनी चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये भी बात मुझे पहले से पता थी, ठीक है, तुमको भी पता होगी, डेफिनेट सी बात है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये काम किया है। सी, 1 मीटर इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर लिख दिया है, और सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा है, ठीक है। नाउ सी, अब हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी ये 10 के जो एक नंबर होता है जो कि 10 के फॉर्म में होता है, ठीक है, और जब कभी ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज ऐड दी नंबर ऑफ जीरोस, राइट। जैसे यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, दीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, राइट। तो इसका मतलब अब टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल बी गेटिंग 5 जीरोस, ठीक है।
1 2 3 4 5, वी विल बी गेटिंग 5 zeros. ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया है, यहाँ पे बन गया है ये 1 लाख g सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. अब दिस इज नोन एज व्हाट, डाइन. ऑब्वियसली दिस इज नोन एज डाइन, हमने अभी भी पढ़ा. ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बन गया डाइन. और हमने 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 5, तो वी राइट 10 की पावर 5. दैट मीन्स हमने एक रिलेशन डेराइव कर लिया है, दैट इज व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द न्यूमेरिकल सेक्शन. देखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन. वी हैव लर्न दैट थिंग, वी हैव डिराइव दिस फॉर्मूला on our own, right, just by the knowledge of these two. अगर हमें ये knowledge होगी, that means we can derive this formula easily. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ questions कर लेते हैं जो कि हमने अभी अभी formula पढ़ा, उसी पे based questions हैं. ठीक है, now let's see. सभी बच्चे साथ साथ करते चलेंगे, मेरे साथ साथ करते चलेंगे. जिनको कोई दिक्कत आती है, जो स्टक हो जाते हैं, वो बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देखेंगे. ठीक है, now see, calculate the force required to produce an acceleration of 5 meter per second square in a body of mass 2.4 kg. Now see, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, वो ये कि आप उस क्वेश्चन को पढ़कर जो भी चीज़ें गिवन हैं उनको नोट आउट करें. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी गिवन वाला. ठीक है, तो वी विल राइट ऑल द गिवन थिंग्स. तो हमारा फर्स्ट गिवन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमें मास पता है 2.4 kg, तो वी विल राइट मास 2.4 kg. नाउ वी नो m, वी नो a, वी कैन कैलकुलेट f बाय यूजिंग द फॉर्मूला फेरी इक्वल्स टू मा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को स्टेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट, वी विल पुट इन द वैल्यूज. 2.4 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, राइट, इट शुड बी दिस. हाउ मच, सभी बच्चों का 12 न्यूटन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 12 न्यूटन. बट क्या हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया है, क्या इन चारों ऑप्शंस में से क्या वो है, नहीं है. सो व्हाट वी विल बी सीइंग कि भाई यहाँ पे जो न्यूटन है और यहाँ पे सारी यूनिट्स हमें डाइन दी हुई हैं. दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी नो द रिलेशन, वी हैव जस्ट डिराइव्ड द रिलेशन, सो वी नो द रिलेशन. The relation is 1 Newton equals to 10 की power 5 dyne. Right? अब 1 Newton equals to 10 की power 5 dyne है and I want to find the value of 12 Newton. So what should I do? I should multiply 12 on the both side. So I will multiply 12 on both sides. Now see, 12 into 1 Newton equals to 12 into 10 की power 5 dyne. I have multiplied 12 on both the sides of the equal. Now it will be 12 Newton. Why 12 Newton? Because we know that 12 ones are 12. That's it. ठीक है, तो यहाँ पर और हमारा क्या हो जाएगा, 12 into 10 की power 5 dyne. That means the 12 Newton force is equal to 12 into 10 की power 5 dyne force. Right? This is the value of force. Now we can match in our options. So which option is correct? We should say our option A is correct. All right. Now note it down very fast so that we can move on to the second question. All right, then next move on to the second question. This will be a very challenging one, so beware. All right, read it very carefully first and then try to solve it. Now, all the students come with me.
A ball of mass 0.02 kg, so this is a very small value, right? 0.02 kg is initially moving with a velocity of 100 meter per second. ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं. On applying a constant force on the ball for 0.5 second, it acquires a velocity of 150 meter per second. Calculate the following. ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट आउट ऑल द गिवन थिंग्स. ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं चलता है कि भाई ये किसका वैल्यू है, ठीक है, कौन सी चीज का वैल्यू है, लाइक यू कैन बी कंफ्यूज कि भाई 0.5 ये किसका वैल्यू है, तो आप यूनिट को देखो. जैसे ही आप यूनिट देखोगे आपको पता चल जाएगा. कैसे पता चल जाएगा? 0.5 सेकेंड है डेफिनेटली. तो हम ये बात जानते हैं कि जो ये सेकेंड है ये किसका यूनिट है? टाइम. दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू फॉर टाइम. इसी तरीके से आप इसको देखो, kg. We know kg is a unit for mass. That means we know that 0.02 kg is the value of mass of the body, right? यहाँ पर देखो मीटर पर सेकेंड, it can be considered, right? या तो velocity होगा, speed होगा. That is the same thing when we talk about the straight line. तो यहाँ पर जो 100 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड है, we will be informed that this is the value of the velocity, right? तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिख देते हैं given things. ठीक है, हमें क्या क्या मिल गया है कि भाई 0.02 kg तो हमारी मास का वैल्यू है. ठीक है, और फिर हमारे पास देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हेयर आर टू वेलोसिटीज, वन शुड बी इनिशियल एंड द अदर वन शुड बी फाइनल. तो सी इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी, दैट मीन्स द इनिशियल वैल्यू विल बी 100. सो हमको याद है ना कि हमने इनिशियल वेलोसिटी कौन से वेरिएबल से डिनोट की थी? याद है ना हमको? इनिशियल वेलोसिटी को हम करते हैं स्मॉल u से. ठीक है, तो दैट शुड बी 100 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब देखते हैं हम टाइम कितना आ रहा है भाई? 0.5 सेकेंड. अब आ रहे हैं हम फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी जो कि है स्मॉल v, वो हो गई है 150 मीटर पर सेकेंड. तो हमने क्या किया है? 1 2 3 4 चीजें गिवन थी, 4 चीजें हमने यहाँ जो है लिख दी है. अब हमें देखना है कि कैलकुलेट हमें क्या करना है. सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, दैट मीन्स मुझे एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो यहाँ पर जो मुझे फॉर्मूला पता है दैट इज v माइनस यू बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पर जो v का वैल्यू है देखो वो क्या है? 150. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 150. u का वैल्यू क्या है? 100. तो यहाँ हमने लिख दिया है 100 डिवाइडेड बाय t कहाँ है? 0.5. तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 0.5. कैलकुलेट कर लें, 150 में से 100 गया तो कितना बचता है? 50. तो हम यहाँ लिख देंगे 50 और नीचे लिख देंगे 0.5. जब भी तुम्हें इस तरीके की कोई वैल्यू मिले, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव द पॉइंट फर्स्ट. तो लेट्स रिमूव द पॉइंट. जैसे यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, अपोजिट में जो है एक जीरो जुड़ जाएगा. हाउ? देखिए डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटा, दैट मीन्स एक और जीरो जुड़ जाएगा न्यूमरेटर में. तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, अब ये ऐसा बन जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ द पॉइंट, राइट? अब देखेंगे इसको इजीली हम कर सकते हैं 100. तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आ गया है. ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड. जो मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालना है, वो भी किसका? फोर्स का. दैट मीन्स हमें डायरेक्शन नहीं निकालनी है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है. दैट मीन्स नंबर और यूनिट. ठीक है, तो देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए, राइट? ए का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे जो मास है वो कितना है? 0.02 kg, 0.02 kg. ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो लेट्स मल्टीप्लाई.
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही हमें आ जाएगा 2 न्यूटन, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी न्यूटन, सो इट वुड बी 2 न्यूटन। दैट्स हाउ वी डू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, बिकॉज न्यूमेरिकल से सभी बच्चे डरते हैं, मतलब काफ़ी बच्चे, सभी तो नहीं, काफ़ी बच्चे डरते हैं, जो कि एक डरावनी चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डरावने नहीं होते। ऑल यू हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है, क्या इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन नहीं है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट करो। ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे आप लोगों ने सीखा है क्या, जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला बेसिस पे किए हैं, बट आई शुड गिव यू द होमवर्क फर्स्ट। तो मैं आपको अभी होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, होमवर्क आपको कहाँ सबमिट करना है, यू हैव टू सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम, सो डू इट। यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देती हूँ आपका। एक्सरसाइज 1 का होमवर्क करना है आज आपको, एंड इट इज क्वेश्चन 1, 3, 10, 11, 14। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 10, 11, 14. This is the homework for today. All right, you have to do it, and what you have to do after doing your homework, you have to submit it on the Google Classroom. Alright, now do the homework, try to practice out the questions. ठीक है, कोशिश करो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने इजी दिए हैं बिकॉज एक्सरसाइज 1 में इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हम लोगों ने सीखा है न्यूमेरिकल्स कैसे करना है फोर्स के फॉर्मूले पे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऑलराइट, एंड देन वी विल बी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फोर्स, क्या होते हैं, मास वेट में डिफरेंस वगैरह क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम फ्यूचर लेक्चर्स में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do share it a lot to with your friends, with your relatives, whoever want to study hard. All right, and see you in the next class. Thank you so much.